Hello and welcome to NewsClick's Daily Roundup. I'm Prashant. And I'm Pragya. We look at the major news of the day. Has the Modi government ignored rules for electoral bonds? The privatization drive continues, a proposal for strategic sale of 5 public sector units. The BJP has allegedly received funding from a firm linked with terror funding. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has been indicted for corruption. And what is the future of the protests in Lebanon? The Modi government ignored rules for electoral bonds. According to a story done by the journalist Nitin Sethi, the investigative pieces he has done show that the electoral bonds are rife with corruption. The Reserve Bank of India had raised serious questions about electoral bonds, but the government still decided to go ahead with them. Though the talk around electoral bonds is all about transparency, this scheme has opened the floodgates for massive corruption. NewsClick spoke with Nitin Sethi. Let's have a look at the video. सरकार ने मन बना लिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड बनाने हैं। चुपचाप ऊपर के स्तर में सरकार में ये काम हो रहा था 2017 के बजट से पहले। अचानक एक दिन किसी अफसर को समझ आया कि अगर ये बॉन्ड बनने हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो होता है इसको बदलना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता। सरकार ने इससे पहले नहीं सोचा था ये, तो उसने एक मैसेज भेजा, अपना ईमेल भेजा कि ये अब 2 लाइन का चेंज कराना चाहिए हमको, इसके बिना नहीं होगा। तो सरकार को लगा कि अब आरबीआई से एक बार बात तो करनी पड़ेगी कि उन्हीं के बारे में जो एक्ट है उसको बदलना है। तो शनिवार के दिन में जबकि सरकार बंद होती है, सोमवार को बजट आना था, शनिवार को सरकार ने आरबीआई को एक 3 लाइन का ईमेल लिख के भेज दिया। बाकी सब भी नहीं बताया कि क्या होने वाला है, बहुत सारे बदलाव आने वाले थे। सिर्फ ये बोला कि आपके एक्ट में हम ये 2 लाइन बदल रहे हैं और आपको इसके बारे में क्या लगता है। अब उम्मीद मेरे ख्याल से ऐसी थी कि सैटरडे है, सोमवार तक बजट हो जाएगा, बात निकल जाएगी आगे। लेकिन आरबीआई इतना घबराया कि सैटरडे संडे के दौरान उसने पूरा मंथन करके एक पूरी बड़ी चिट्ठी वापस भेजी सरकार को, जो सोमवार सरकार को मिली, और उसमें 3 कारण बोले जिस कारण से उन्होंने कहा कि ये एकदम नहीं होना चाहिए। एक, उन्होंने बोला कि ये इससे काला धन पॉलिटिक्स में आने का रास्ता खुल रहा है। दूसरा, उन्होंने बोला कि आप कहते हैं कि ये पारदर्शिता लाएगा, ये एकदम उल्टा करेगा। तीसरा, उन्होंने बोला कि आप जब बॉन्ड बनाते हैं, जिनको हम बॉन्ड कहते हैं, ये बॉन्ड एक तरीके से करेंसी है या पैसा ही है, नोट ही है, तो आप किसी और को हक देने वाले हैं नोट बनाने का, जबकि नोट बनाने का काम सिर्फ हमारा है। इससे देश की पूरी अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ सकता है, इसलिए ये एकदम नहीं करना चाहिए। सरकार ने वो चिट्ठी देखी और बोला कि इन लोगों को समझ नहीं आया है, वैसे भी बहुत देर हो गई, हमने फाइनेंस बिल पहले ही तैयार कर दिया, अब तो परसों हम जाने वाले हैं बजट में, और बोला कि बाद में बात करेंगे। और सरकार ने अगले 48 घंटे के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिंदा कर दिए। लेकिन इसके बाद चुनाव आयोग जैसी संस्था भी इस पे कड़ी आपत्ति दर्ज करती है, और दर्ज करने के बाद सरकार उनकी आपत्तियों को अनसुना करती है और संसद में झूठ भी बोलती है, जो आप दूसरी रिपोर्ट में जाहिर करते हैं। ये सारी बातें क्या हैं? ये भी अपने में एक अजीब बात है कि सरकार ने इलेक्शन कमीशन से कभी पूछा ही नहीं, जबकि ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, कैसे पारदर्शिता आनी चाहिए, कैसे फंडिंग होनी चाहिए पॉलिटिक्स की, पर उससे कभी बात नहीं हुई। खैर, आखिरकार इलेक्शन कमीशन हम जैसे सबको पता चला, उनको भी पता चला, ये बन गया। उन्होंने उस पर अध्ययन किया और एक लंबी सारी चिट्ठी लिखी मई 2017 में, और करीबन वही बोला जो आरबीआई ने बोला था, लेकिन और भी कड़े शब्दों में बोला। उन्होंने कहा कि आप मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हैं, शेल कंपनियों को खोल दिया, जो खाली कंपनी, जो फर्जी कंपनी है, जो सिर्फ पैसा फेंकने के लिए बनती हैं, वो इसको स्पष्ट कर देंगे कैसे, किस तरीके से। तो ये ऐसी कंपनियां हैं जो कोई काम नहीं करती हैं, लेकिन उनके थ्रू पीछे से काला धन आता है और चुपचाप सफ़ेद होके वो धंधे में उतर जाता है। तो उन्होंने कहा आप इन कंपनियों से लेके पैसा आप पॉलिटिक्स में डालने वाले हैं इस जरिए से। तीसरा, उन्होंने बोला कि आपने बाहर की जो कंपनियां हैं उनके लिए भी रास्ता खोल दिया है हमारी इंडियन पॉलिटिक्स को खराब बदलने के लिए, उनका इन्फ्लुएंस हमारे अंदर आ जाएगा, जो कि बहुत गलत बात है। कोई भी, अभी हमने सुना था यूके में ये स्कैंडल हुआ, यूएस में, कि बाहर का पैसा फनल होता है इलेक्शंस को बदलने के लिए। तो और चौथा, उन्होंने बोला वही बात जो आरबीआई ने बोली थी कि आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, ये तो एकदम उल्टा है, किसी को नहीं पता चलेगा सरकार के सिवा कि किसने किसको पैसा दिया। तो ये 4-5 बातें बोल के उन्होंने भी बोला कि एकदम मत करिए। सरकार ने वो चिट्ठी आने के बाद ऐसे अपने को समझा बनाया जैसे हमें तो चिट्ठी मिली नहीं, और स्कीम बनानी शुरू कर दी इलेक्टोरल बॉन्ड चलाने की। अलग एक मंत्रालय है जिसको लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री कहते हैं, उन्होंने चिट्ठियां लिख के बार बार फाइनेंस मिनिस्ट्री को बोला, वित्त मंत्रालय को बोला कि इस पे जवाब तो दीजिए। वित्त मंत्रालय ने उसको भी अनदेखा कर दिया, अपना काम करते रहे।
स्कीम चल पड़ी, स्कीम बना दी अचानक, क्योंकि अगेन कॉमोडोर लोकेश बत्रा के पास कुछ कागज़ आ गए थे जिनसे उनको भनक थी कि इलेक्शन कमीशन ने ये बोला है। तो एक पार्लियामेंटेरियन ने पार्लियामेंट में सवाल पूछा सरकार से कि क्या इलेक्शन कमीशन ने आपको ऐसा कुछ लिखा और कहा है, क्या आपत्ति जताई है? तो मंत्री साहब ने खड़े होकर पार्लियामेंट में बोल दिया ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लोकेश बत्रा साहब अच्छे मतलब पब्लिक स्पिरिटेड आदमी है, उन्होंने फिर वो चिट्ठी बाहर निकाली, देखा कि इलेक्शन कमीशन तो लिखा है। तो हक साहब जो एमपी थे जिन्होंने सवाल उठाया था, उन्होंने प्रिविलेज का मोशन बोला कि हमें सदन में झूठ बोला गया है, मंत्री के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो मंत्री ने फिर घुमाया एक बार उसको, दूसरा झूठ एक नया बनाया पिछले झूठ को छुपाने के लिए कि चिट्ठी आई थी वो किसी और महकमे में थी, हमारे पास नहीं थी। बत्रा साहब फिर कूदे, उन्होंने बोला अरे आपके पास भी पड़ी थी। अब फिर तीसरा झूठ बना कि हाँ आई थी लेकिन उस पर मंथन कुछ ऐसा हुआ नहीं। लोकेश बत्रा जी ने जब दिखाया कि चिट्ठी वित्त मंत्रालय भी आई है तो सरकार फिर एक नए झूठ पे आ गई कि हमसे बात हुई नहीं, हाँ ठीक है चिट्ठी आई थी पर हम आगे बढ़ चले। हम लोगों ने अपनी कहानी में दिखाया कि सिर्फ चिट्ठी ही नहीं आई थी, वित्त मंत्रालय ने कोशिश करी थी कि इलेक्शन कमीशन को एक सीक्रेट मीटिंग में बुला लें, किसी तरह कुछ कहलवा दें उनसे कि बोल दें कि हाँ हो गया, इन्होंने भी साफ कर दिया है। और एक्चुअली कभी इलेक्शन कमीशन ने हाँ मानी नहीं थी, वो शुरू से अभी तक आज तक इसके खिलाफ रहा है, जबकि सरकार बोलती है कि नहीं नहीं वो शुरू में कुछ आपत्ति थी उसके बाद ठीक। On Wednesday, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced that the government has approved strategic sales of 5 public sector units or PSUs. The PSUs are Bharat Petroleum Corporation Limited, the Shipping Corporation of India, and the Inland Cargo Mover Container Corporation of India or CONCOR. THDC India and NEEPCO, the North Eastern Electric Power Corporation Limited. Watch this video in which senior journalist Anindo Chakrabarti discusses the historical role that PSUs have played in shaping the Indian economy. पिछले 3 दशकों से आपने सुना होगा कि सरकार को कंपनी नहीं चलाना चाहिए। अर्थशास्त्री कहते हैं कि सरकारी कंपनियों को प्राइवेट को दे देना चाहिए, उनको बेच देना चाहिए, वही अच्छी तरह से इनको चला सकते हैं। इसको कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और इन सब को अर्थशास्त्री कहते हैं आर्थिक सुधार यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था तब आप याद रखिए कि बहुत सारे चीज़ों में निजी कंपनियां निवेश नहीं कर पाती थी क्योंकि उनके पास पूंजी नहीं था। वो कौन कौन से हुए? बिजली एक बहुत बड़ी जगह थी, रेलवेज था जहां पर प्राइवेट सेक्टर निवेश नहीं कर पाती थी, खदानों में निवेश नहीं कर पाती थी, जहाज चलाने में भी प्राइवेट सेक्टर के पास उतना पैसा नहीं था। अब आप देखिए ये सारी कंपनियों का जिनका विनिवेश हो रहा है कहीं ना कहीं इन्हीं सेक्टर में है। एक और बड़ा सेक्टर जो बाद में उभर कर आया वो है ईंधन का सेक्टर, जो आपका हुआ पेट्रोल डीजल वगैरह। क्या होता है वहाँ पर? कच्चा तेल देश में आता है, उसको रिफाइन किया जाता है, पेट्रोल डीजल बनता है, फिर आपके पेट्रोल पंप तक पहुँचता है, फिर आपके गाड़ी ट्रक बाइक वगैरह में वो जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है उद्योगीकरण के लिए, किसी फैक्ट्री चलाने के लिए। इन सभी चीज़ों में सरकार का रोल सबसे बड़ा रहा शुरू से ही। आप देखिए अगर हम बैंक की देखें तो सरकारी बैंक सबसे ज़्यादा उद्योग को लोन देती है। अगर हम मशीन देखें तो BHEL जैसे कंपनियां सबसे ज़्यादा मशीन बनाती है देश में। अगर हम कच्चा माल की बात करें तो खेतों से कच्चा माल तो आता है, साथ में खदान कोयला जहाँ पे बनता है या स्टील वगैरह बनता है वो सारा कहाँ से आता है? या तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि देश का सबसे बड़ा स्टील कंपनी है, या कोल इंडिया जो कोयले के खदानों से कोल निकालकर हमको देती है। फैक्ट्री चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है ऊर्जा, और ऊर्जा क्या क्या होता है? एक है बिजली। बिजली कहाँ से आता है? ज़्यादातर सरकारी कंपनियों से ही आता है, NTPC जैसे कंपनी से आता है। साथ में मैंने कोयले की बात आपको कह दी है, कोल इंडिया से कोयला आता है। और पेट्रोल डीजल इसकी भी ज़रूरत होती है। पेट्रोल डीजल कहाँ से आता है? कच्चा तेल खाड़ी के देशों से लाया जाता है, यहाँ पर उसको रिफाइन किया जाता है और फिर सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उससे पेट्रोल डीजल पहुंचता है। इसमें ज़्यादातर देश के अंदर सरकारी कंपनियां हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल है, HPCL है और BPCL है यानी कि भारत पेट्रोलियम। फिर माल को यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ता है। वो कैसे होता है? मालगाड़ियों से होता है। मैंने पहले ही आपको बताया कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जहाँ पर सरकार अपना शेयर कम कर रही है वो सबसे बड़ी मालगाड़ी बनाने वाली कंपनी है।
हमारे देश में शुरू से ही उद्योग के लिए बहुत सारा कच्चा माल या मशीन बाहर से आता है, मतलब उसको इंपोर्ट किया जाता है। वो कैसे आता है? जहाज़ से आता है। और इसीलिए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनी थी, ताकि ऐसे चीज़ें बाहर के देशों से हमारे देश में लाया जा सके। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत सारा माल जो आता है वो सिर्फ कच्चा तेल और कोयला भी है, जो मैंने आपको कहा हमारे देश में ऊर्जा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन सभी कंपनियों की एक टाइम पर हमारे देश के प्राइवेट सेक्टर यानी कि उद्योगपतियों को बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि ये सब जो सर्विस देते थे या जो चीज़ें बेचते थे वो सरकार प्राइवेट सेक्टर को कम दाम में बेच कर देती थी और उसी से प्राइवेट सेक्टर फिर मुनाफा करती थी। अब क्या है, प्राइवेट सेक्टर को इनकी ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के पास काफ़ी पैसा आ गया है, तो ये कंपनियां वो खरीदना चाहती है। While the controversy involving electoral bonds goes on, The Wire has done a story with details of the BJP receiving funds from a firm under the scanner for terror funding. According to The Wire, the party took a large donation from a company being probed by the Enforcement Directorate for helping terror funding. The details emerged from the financial declarations made by the BJP itself to the Election Commission. The company in question, RKW Developers Limited, is being probed by the ED for carrying out transactions with and for buying properties from the late Iqbal Memon, alias Iqbal Mirchi, and accused in the 1993 Mumbai bomb blast and a close aide of mafia boss Dawood Ibrahim. In 2014-15, RKW, which is associated with the beleaguered Diwan Housing Finance Limited, gave Rs 10 crore to the party. This information was also released to the public by the website Cobra Post in January 2019. Para-teachers in West Bengal have been on an indefinite hunger strike for 8 days now. They are demanding that pay bans be introduced for their salaries. At present, the para-teachers receive a consolidated sum as pay and regular teachers get no benefits. If pay bans are introduced for para-teachers, they will be entitled to benefits such as regular increments, dearness and medical allowances, and leave for childcare. The para-teachers have been saying that they are entitled to the same pay scale as assistant teachers. Thousands of them launched an indefinite protest on November 11 in the state capital, Kolkata, outside the office of the Education Minister, Partho Chatterjee. When the government refused to respond to them after 5 days of protest, they launched an indefinite hunger strike on the evening of Friday, November 15. After 8 days of hunger strike, several fasting teachers were hospitalized in critical condition. One protesting teacher suffered a brain stroke on November 21 and was taken to the hospital. West Bengal Governor Jagdeep Dhankar today appealed to all sides to initiate a dialogue to resolve the issue. But Chatterjee has said that the para-teachers are making a mistake by continuing their strike. Meanwhile, Lok Sabha witnessed heated arguments between Treasury and opposition benches on Friday when BJP MPs from West Bengal tried to raise the issue of the strike. When BJP MP Lokit Chatterjee started speaking, TMC members rushed into the well saying that she was misguiding the House. The teachers have said that they will continue their hunger strike until the government agrees to their demands, as they are unable to survive on their meager salaries. That's all for the national news. We now move on to the international news. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu was on Thursday charged by the country's Attorney General on 3 counts of corruption. This makes him the first Israeli Prime Minister to be indicted on criminal charges while still in office. Netanyahu was charged with committing bribery, fraud, and breach of trust after 3 years of extensive investigation in 3 different scandals. The 3 corruption cases brought against the Prime Minister are known as Case 1000, Case 2000, and Case 4000. In Case 1000, Netanyahu and his wife Sarah allegedly received lavish gifts in return for political favors. Case 2000 involves Netanyahu being caught on video asking Aaron Moses, the publisher of one of Israel's largest daily newspapers, to give him and his government better coverage rather than criticizing it. In return, Netanyahu promised Moses legislation against his competitor. In the most serious of the 3 cases, that is Case 4000, Netanyahu stands accused of granting regulatory favors worth around $500 million to Israeli telecommunications giant Bezeq Telecom. This is in exchange for positive coverage of himself and his family. If found guilty, Netanyahu could be facing up to 10 years in prison for bribery, along with 3 years in prison for fraud and breach of trust. The past week saw anniversaries of 2 major protests. The anti-systemic protests in Lebanon completed 1 month on November 17th.
In the past month, the massive rallies against the system of governance and its neoliberal policies brought down a prime minister and have asked tough questions to the country's leaders and its political system. We talked to Jana Nakhal of the Lebanese Communist Party on the way ahead for the protesters. Right now, especially from the side of the left, what would be the concrete, goals as well as the path that the organization see as the way ahead? So we're thinking about two parallel, let's say, chores. First of all, a decentralized organizing, because all the time just linking people to Beirut is really it's unfair to actually work. And we're doing this. We're organizing in all the regions, trying to connect, trying to see what each of the regions needs from a local perspective, from a more, in the field perspective, with individuals and groups, trying to see what the demands are, the let's say sub-demands of the regions are. This is one. Two, creating communal alternatives. What we have discovered in this intifada is that people are really aware of what community is and what solidarity is and what communal support and activity is. I'm talking about organizing at the level of, because we're expecting a food crisis, we're expecting an economic crisis in general. So we're talking about organizing at the level of something that looks like a cooperative, like cooperatives, unions, groups of professionals and people that have similar interests from around the regions, connecting and working together in order for us to, whenever the economic crisis is going to take place, whenever the lira is going to be hit, in order for us to have an actual communal network on the ground, in the regions, to support the most disenfranchised who are going to be facing this blow more directly. And the main demand, I understand, still remains the complete a new constitution and the complete re-envisioning of the system. So what kind of a system is being envisioned by the left? We're talking about a system that approaches the situation from a social justice perspective. We're talking about a system which does not support privatization. We're talking about a system which is not neoliberal in its essence. So this is the kind of state and the kind of economic, social system that we're trying to push forward to. And you would like these aspects to be specifically written into the constitution? Definitely. We're talking in terms of institutions, but we know that this is a long-term thing. So the first step we're talking about is an interim government, which will change first and foremost the current electoral law, because this is an electoral law that is continuously reproducing the same elite in power. So we need a new electoral law that would allow the reproduction of the intifada into the parliament, that the intifada is represented in the parliament, so it can actually then impose changes in the institution as well as in the existing law at all levels. And this is what we think that would be the first two steps into the changes of the system in Lebanon. It's also been a year since the Yellow Vest protests broke out in France, leaving an indelible mark on the country's polity and society. While the results of the movement have been mixed, it did force the politicians of France and its president to temporarily at least respond to the people's concerns. Nevertheless, major questions remain on the future of the movement. Here is a look at some of the key challenges faced by the movement and what lies ahead for it. To begin with, they faced immense repression from the police. At least 4 people have died and some estimates have put the number at 10. Thousands have been injured and dozens have been disabled. Over 15,200 people have been arrested, with at least 1,000 people being imprisoned. On the other hand, the police have enjoyed complete immunity, with only 2 of its members being indicted till now for all this violence. As we mentioned earlier, the lack of formal structures and a clear agenda has given the space to far-right elements to attempt to drive the movement in favor of their interests. The media and the government, however, have exaggerated the influence of these far-right movements and painted the whole movement as being fascistic. Marine Le Pen,
Leader of the far-right National Rally has also used the right-wing participation to her advantage. She has tried to portray the movement as being anti-migrant and in line with her policies. However, it's important to note that she has also rejected the demands for increase in minimum wages and pensions. And finally, the Yellow Vests have since the beginning rejected all political parties and unions and expressed deep distrust in bureaucracy of all kinds. And although the left and the unions in the country have been trying to steer the movement in a more progressive direction, they have not been too successful. During the European parliamentary elections in May, major sections of the Yellow Vests are believed to have voted for the National Rally in order to defeat Macron, although Macron's list was still successful. The left in the country has recognized that ousting Macron cannot be the only agenda if major social and economic transformation is to be achieved. Simply replacing Macron with another similar neoliberal figurehead will not yield any kind of justice or equity of any sort. The structures that create and perpetuate this inequality need to be exposed and dismantled by the French people. What is the future of the movement? The number of participants in the movement is much less now, and there are a number of reasons. One, of course, is the exhaustion of the movement not really going anywhere after the initial victories. The lack of a common progressive agenda for all the protesters is yet another reason. And then, of course, there's a constant violent police repression and media distortion, which is also not helping protests. However, the number of people continuing the fight cannot be ignored. Such crystallized discontent among the people seems inextinguishable in the near future. The ultra-right-wing components in society are trying to push the protests in a single direction with one agenda, ousting Macron. They're also aiming for electoral dividends by channelizing the protests against refugees and migrants, thereby polarizing the country. But the left in France is making many efforts to orient the protest to achieve much-needed social reforms in the country. They're actively organizing mobilizations of working class, students, youth, etc. on the sidelines of the larger movement. They're aware of the fact that just replacing Macron will not solve the problem. 2 weeks ago, a countrywide meeting of the Yellow Vests, called the Assembly of Assemblies, decided to join France's largest trade union, CGT, in the general strike scheduled to begin on December 5th. The fight is definitely not over. That's all we have in this episode of NewsClick's Daily Roundup. To know more about these stories, visit our website newsclick.in and follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Thanks for watching. Thank you for watching.